Good afternoon, everyone. I hope I'm audible. So, good afternoon, everyone. Please let me know in the chat section that I'm audible and the voice is clearly visible to you all. Okay, I hope everything is fine. So, yes, I welcome you all once again to our ARD static series. So, as you know that we have started ARD static series on YouTube. Already, I have taken 3 lectures. This is our class 4. So, this is a lecture 4. Okay. First lecture we have covered on introduction to agriculture, second on agronomy and field crop, third on farming system, and today we are going to discuss about cropping system, cropping pattern and agrometeorology, right? So I hope everything is fine. Thank you. Thank you so much for the confirmation. So yes, so let's see, let's discuss what are the important topics, what are the important questions of these topics. And also I have bought some previous year questions also so that you can understand what kind of questions are being asked from these topics, right? So before I start, I would like to tell you about our demo course. So we have a 2-day demo course for you. If you are interested in our main course and you wanted to know how we are covering all the content, how we are providing all the content to you. For that, you can avail this 2-day demo course for just 1 rupee. You can access everything and then decide whether you want to purchase our main course or not, right? So with that, I'll start. But again, I would like to show you the timetable. So already we have covered these topics, right? Today's class 4, we are covering cropping system, cropping pattern, and agrometeorology. And on Monday, we'll be covering seed and sowing, right? So yes, with this, let's start. And first, let me give you the answers of previous day. So yesterday, I have given you first question, which was which farming system is described as being most suitable for densely populated country with scarce land availability such as India and China. Answer will be intensive farming. I have told you, extensive farming is done in those countries where there is less population and they have a huge land that can be utilized for farming. But in densely populated country like India and China, we go for intensive farming, right? Coming to the next question that was given to you. So it was the term transhumance refers to which of the following practice. So if you can understand, so basically this means nomadic herding. Okay, this is the meaning of, or this is the another term for nomadic herding. So here answer will be, it is the seasonal movement of pastoral communities from along with their livestock between fixed graze area. So it is the seasonal movement that we have discussed yesterday also about nomadic herding. And again this question was asked to you in 2025. ठीक है, I think 2025 या 24 में क्वेश्चन पूछा गया था. चलो, with that let's come to today's lecture and let me first discuss about the difference of cropping system and farming system. Yesterday we discussed about farming system. I told you exactly what is the meaning of farming system. Then there comes another term which is known as cropping system. So यहाँ पे थोड़ा सा confusion हो जाता है कि मैम cropping system क्या है. So basically students, what is cropping system? It is basically whatever cropping pattern you are adopting, right? We'll discuss cropping pattern in detail because वहाँ से काफी question पूछे जाते हैं. बट अभी के लिए ये समझ लो कि जो भी क्रॉपिंग पैटर्न आप अडॉप्ट करते हो अपने फार्म में, हाउ दैट क्रॉपिंग पैटर्न इज इंटरैक्टिंग विद ऑल द रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट, दैट इज क्रॉपिंग सिस्टम. सो बेसिकली क्रॉपिंग पैटर्न as well as its interaction with resources, technology and environment that is present in the farm is known as cropping system. ठीक है, cropping system do not include livestock rearing because यहाँ पे सिर्फ क्रॉपिंग पैटर्न की बात हो रही है, यहाँ पे फार्मिंग की बात नहीं हो रही है. तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? बेसिकली कौन सा क्रॉप पैटर्न आप यूज कर रहे हो अपने फार्म में, प्लस जो क्रॉपिंग पैटर्न आपने यूज किया है वो कैसे रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट से इंटरैक्ट कर रहा है. और क्रॉपिंग पैटर्न प्लस इट्स इंटरैक्शन विद द रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट मेक्स योर क्रॉपिंग सिस्टम. ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम इज अ ब्रॉड टर्म जिसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे हमारा क्रॉपिंग पैटर्न इंटरैक्ट कर रहा है विद द रिसोर्सेज. जबकि फार्मिंग सिस्टम को अगर हम देखें, इफ यू कैन रिकॉल yesterday only we have discussed, फार्मिंग सिस्टम इज appropriate mixture of all फार्म एंटरप्राइजेस. ठीक है, सो डिफरेंट फार्म एंटरप्राइजेस जो हैं वो कैसे इंटरैक्ट करें आपस में, या उनको कैसे एलोकेट किया जाए, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाए ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट बना सको, दैट इज या मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी कर सको, दैट इज योर फार्मिंग सिस्टम. ठीक है,
आई होप इट इज क्लियर नाउ व्हाट इज क्रॉपिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम हमने डिटेल में कल डिस्कस कर लिया था। आई होप क्रॉपिंग सिस्टम क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है, जस्ट लेट मी टेक यू थ्रू द अनदर स्लाइड वेयर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट पहले दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2027 sorry 2017, the order in which the crops are cultivated on a piece of land over a fixed period is called as. ठीक है, does anybody knows the answer? Please let me know. If do not, then don't worry, I'll give you the answer shortly. I'll explain you the concept. Okay, so if anybody knows the answer, please let me know. So students, right answer for this question is cropping pattern. ठीक है, so basically it says the order in which the crops are cultivated on a piece of land over a fixed period is called as cropping pattern. ठीक है, it is the cropping pattern. Now let's understand what is the meaning of cropping pattern and what are the different types of cropping pattern जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या है स्टूडेंट्स? इट इज बेसिकली द ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड ओवर अ सेम पीरियड ऑफ टाइम, राइट? तो आप किस सीक्वेंस में क्रॉप को ग्रो कर रहे हो ओवर योर फील्ड, दैट इज द क्रॉपिंग पैटर्न. ओके, व्हाट सीक्वेंस यू आर फॉलोइंग. Okay, whether you are growing rice, wheat, whether you are following rice, pulse, wheat, so there can be different sequence and different crops can be grown in different arrangement over a field, but what sequence you are following, that is the cropping pattern. Okay, very good, those who have attempted the question and given the right answer, very good. ठीक है, तो क्रॉपिंग पैटर्न समझ लीजिए स्टूडेंट्स क्या होता है. इट इज बेसिकली द ईयरली सीक्वेंस, राइट? एक साल में आप कितनी क्रॉप्स किस तरीके से ग्रो कर रहे हो, दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न. फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा राइस व्हीट क्रॉपिंग पैटर्न, राइट? व्हाट इज दिस राइस व्हीट क्रॉपिंग पैटर्न? कि आप राइस के बाद नेक्स्ट सीजन में व्हीट ग्रो कर रहे हो, राइट? ये एक पैटर्न हो गया. देन अदर पैटर्न कैन बी कि राइस के बाद यू ग्रो अ पल्स क्रॉप एंड देन ग्रो अ व्हीट क्रॉप. सो दिस इज अनदर क्रॉपिंग पैटर्न, राइट? सो what pattern you are following exactly over that land, that is the cropping pattern. ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है cropping pattern. Now students, this cropping pattern can be of two type. Okay, it can be monocropping और multiple cropping. ठीक है, जो आपका पैटर्न है क्रॉप ग्रो करने का वो दो तरीके का हो सकता है. either you grow only one crop season after season, year after year, or you are taking multiple crops, right? So based on that we have this classification. So monocropping means growing only one crop season after season or year after year. That will be called as monocropping cropping pattern, right? If we take two or more crops, okay, if we take two or more crops season after season, year after year, then that will be called as multiple cropping. नाम से ही समझ आ रहा है, multiple cropping means we are taking multiple crops, right? I hope it is clear. So monocropping and multiple cropping, I hope this is clear, right? अब इसको डिटेल में समझते हैं, क्योंकि मल्टीपल क्रॉपिंग आप बहुत तरीके से कर सकते हो, राइट? आप एक ही सीजन में यू कैन टेक 2 क्रॉप्स इन 1 सीजन. आप एक ही सीजन में 2 क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो, या फिर आप एक सीजन में एक क्रॉप ग्रो कर रहे हो फॉलोड बाय नेक्स्ट क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन. सो देयर कैन बी मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग मल्टीपल क्रॉपिंग. बेसिकली उसी तरीके से हम मल्टीपल क्रॉपिंग को समझेंगे. बट मोनोक्रॉपिंग आप समझ लीजिए, इट इज ग्रोइंग ऑफ वन क्रॉप सीजन आफ्टर सीजन, ईयर आफ्टर ईयर. बट अब मोनोक्रॉप का अगर मैं एग्जाम्पल दूं राइस, ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल दूं राइस एंड यू देयर कैन बी वन क्वेश्चन इन योर माइंड कि मैम राइस इज अ खरीफ सीजन क्रॉप, right? Rice is a kharif season crop. We can grow rice only in the kharif season. Then how we are growing rice season after season? So students, monocropping do also include, see, अगर आप rice grow कर रहे हो खरीफ season में and you are not growing anything in the rabi season and then again growing rice in the next kharif season, this will be called monocropping. Or there are some areas like in the South Indian, south part of India, there is a temperature, during rabi season also, वहाँ पे winter ज़्यादा नहीं पड़ती है, तो वहाँ पे हम जो राइस है वो थ्रू आउट द ईयर वी कैन ग्रो द राइस, राइट? सो दैट्स हाउ इट्स हैपनिंग ईयर आफ्टर ईयर.
right? Season after season, year after year. So that will be called as monocropping. But when we are taking 2 or more crop, then that will be called as multiple cropping. ठीक है, चलो मल्टीपल क्रॉपिंग को और डिटेल में समझते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग. सो स्टूडेंट्स, if you are taking crop in a sequence, like you are following a sequence of rice, wheat and pulses, right? In rabi season you have sown rice, then you have sown wheat. In the rabi season, sorry, in the kharif season rice, and in the rabi season wheat, and in the zaid season pulses. So you have taken a particular sequence, you have taken 2 or more crop in 1 year. So we are talking about 1 year, okay? This is about 1 year. So within 1 year you have taken multiple crops, and that too in a particular sequence. So that is a sequential cropping. So multiple cropping में एक type की cropping होती है, that is a sequential cropping, where we are taking more crops within a year but at different time period. ठीक है, अलग अलग time period में आप multiple crops को grow कर रहे हो, right? Then there is a intercropping. Intercropping क्या है कि आप एक ही समय में एक से ज्यादा crops को grow कर रहे हो, right? At a time you are growing more than one crop, that is intercropping. So intercropping is again of different type: mixed intercropping, strip intercropping, row intercropping and relay intercropping, right? So पहले sequential cropping, I hope it's clear, right? Sequential cropping आपने समझ लिया है, that within a sequence when we are growing a crop is a sequential cropping. Example दे दिया है मैंने, which is rice, wheat, pulses. ठीक है, अब इंटरक्रॉपिंग में आते हैं. इंटरक्रॉपिंग में आई हैव टोल्ड यू कि एक ही समय में आप जब एक से ज्यादा क्रॉप को लगा रहे हैं, दैट इज इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग कैन बी अ mixed intercropping. Mixed intercropping basically means you are not following any definite pattern, any definite sequence, rather you are just distributing different seeds on the field, right? आपने फील्ड में क्या किया, आपने 2-3 क्रॉप्स के सीड्स लिए एंड यू हैव जस्ट सिंपली ब्रॉडकास्टेड इट. आपने ना कोई रो बनाई, नीदर यू हैव फॉलोड एनी लाइन अरेंजमेंट, कुछ आपने नहीं किया, आपने जस्ट सिंपली ब्रॉडकास्ट कर दिया. यू हैव मिक्स द सीड एंड देन ब्रॉडकास्टेड देम, राइट? आपको नहीं फर्क पड़ता कि कौन सी क्रॉप कहाँ पे ग्रो कर रही है. तो दैट विल बी कॉल्ड एज मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग. बट अगर आप इसी चीज को एक डेफिनेट रोज में करो, राइट? आपने एक क्रॉप की एक रो बनाई, राइट? देन फॉलोड बाय द रो ऑफ नेक्स्ट क्रॉप, फॉलोड बाय द रो ऑफ थर्ड क्रॉप, देन द फर्स्ट. तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? यू आर फॉलोइंग अ डेफिनेट pattern. You are following a definite pattern and you are growing crop in a definite rows. So that will be called as row intercropping, right? इसी का ही एडवांस वर्जन हो जाता है योर स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग. अब स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग में क्या किया जाता है? स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग में बेसिकली स्टूडेंट्स व्हाट यू डू नॉट go for the row intercropping, rather you take multiple rows of one crop. आप क्या करोगे? एक क्रॉप की मल्टीपल रोज बनाओगे ताकि एक ये स्ट्रिप बन जाए, राइट? सिमिलरली दूसरी क्रॉप की आप मल्टीपल रोज बनाओगे ताकि दूसरी क्रॉप की एक ब्रॉड स्ट्रिप बन जाए फील्ड में, राइट? सो यू कैन सी यू आर फॉर्मिंग अ स्ट्रिप हियर, you are forming a strip here, one strip here, one strip here, and then it will be followed by another crop strip, right? So this is called as strip intercropping. अब ये क्यों किया जाता है? Basically it is the advanced form of row intercropping. और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि row intercropping में हम क्या कर रहे हैं? We are growing crop in rows, बहुत adjacent way में. आपकी एक crop के बाद दूसरी crop लग रही है, right? इससे क्या हो सकता है? Competition बढ़ सकता है between two crops. तो उसी कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? वी प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर वन क्रॉप टू ग्रो, और उस क्रॉप की एक स्ट्रिप बना देते हैं. देन वी गो फॉर द स्ट्रिप ऑफ अनदर क्रॉप एंड देन द स्ट्रिप ऑफ अनदर क्रॉप, राइट? सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड दैट इज द बेसिकली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रो इंटरक्रॉपिंग. देन वी हैव रिले इंटरक्रॉपिंग. अब रिले इंटरक्रॉपिंग आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. कैन यू टेल मी क्विकली what is the another name of relay intercropping that we have discussed in previous lecture? Quickly in the chat section, okay? Anybody? Another name of relay intercropping that we have discussed in the previous class. Sachin, I'll discuss about multi-storied cropping also. ठीक है? Nobody? Okay, no problem. So students,
Relay intercropping is also known as para and utera क्रॉपिंग, ठीक है, पेरा एंड उटेरा क्रॉपिंग भी कहा जाता है इसको. व्हाट इज रिले इंटरक्रॉपिंग? सो रिले इंटरक्रॉपिंग में क्या करा जाता है कि बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप, ठीक है, आपकी जो राइस क्रॉप है, फॉर एग्जाम्पल राइस क्रॉप है फील्ड में, ठीक है, दिस इज अ फील्ड एंड योर राइस क्रॉप हैज मेच्योर्ड एंड विद इन 10 to 15 days यू आर अबाउट टू हार्वेस्ट दिस राइस क्रॉप, ठीक है, आप 10 से 15 दिन में क्रॉप को हार्वेस्ट करने वाले हो. आप क्या करोगे? देखो राइस तो मेच्योर हो गई है, अब राइस को जितना न्यूट्रिएंट चाहिए था, जितना वाटर चाहिए था, वो पूरा हो चुका है एंड अब राइस हार्वेस्टिंग स्टेज पे आ गई है. नाउ दिस प्लांट विल नॉट एब्जॉर्ब एनी न्यूट्रिएंट एंड एनी वाटर फ्रॉम द सॉइल, राइट. सो अभी पर क्रॉप इज स्टिल स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, राइट, इट इज स्टिल स्टैंडिंग ऑन द फील्ड. तो क्या होता है कि जो आपका सॉइल मॉइस्चर है that can be utilized by the farmer, ठीक है. तो फार्मर क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द राइस क्रॉप, ठीक है, दैट इज ग्रोइंग इन द फील्ड and it is in the harvesting stage and we are about to harvest it after 10-15 days. What farmer will do before harvesting the rice crop, ठीक है, before 10 to 15 days of harvesting of rice crop, farmer will drop seeds of next crop, ठीक है, in between the rice crop. अब क्या होगा, फार्मर दूसरी क्रॉप का सीड ब्रॉडकास्ट कर देगा या सीड सो कर देंगे इन बिटवीन द राइस क्रॉप, ठीक है. इससे क्या होगा, जो फील्ड में वाटर एंड न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, दैट विल बी यूटिलाइज बाय दिस क्रॉप, okay, that will be utilized by this crop. And after 10 to 15 days when you have harvested the rice crop, then you will have the next crop already ready on the field, ठीक है, वो ऑलरेडी आपकी रेडी होगी फील्ड में, कि आपने सो कर दिया, 10-15 डेज में ये सीडलिंग स्टेज पे होगी, सीडलिंग स्टेज में, या फिर बोल सकते हैं अर्ली इमरजेंस स्टेज पे होगी, राइट. तो आपने यहाँ पे यू कैन सी दैट फार्मर हैज डन व्हाट, फार्मर हैज ब्यूटिफुली यूटिलाइज्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट दैट वाज प्रेजेंट इन द फील्ड. अगर ऐसा ना किया होता तो फिर क्या सिनारियो होता कि first farmer will harvest the rice, okay, then farmer will grow the crop, right, then farmer will sow the seed of next crop. इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि काफी सारा मॉइस्चर लॉस हो जाता है ऑलरेडी फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, क्योंकि आपने जब क्रॉप को हार्वेस्ट कर दिया, योर फील्ड इज एक्सपोज्ड नाउ एंड अ लॉट ऑफ मॉइस्चर विल बी इवेपोरेटेड, राइट. तो वो मॉइस्चर तो लॉस हो गया, राइट. यहाँ पे बेसिकली फार्मर इज यूटिलाइजिंग दैट मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सॉइल एंड आफ्टर दैट हार्वेस्टिंग द राइस, ठीक है. इसीलिए इसको रिले इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है, ओके, इसीलिए इसको रिले इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है. क्लियर? आई होप नाउ इट्स क्लियर. सीक्वेंशियल एंड क्रॉपिंग क्या है, इंटरक्रॉपिंग क्या है, मिक्स्ड स्ट्रिप रो एंड रिले इंटरक्रॉपिंग क्या है, यहीं से ही क्वेश्चंस आते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम हियर. तो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, इट सेज द मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग क्रॉप व्हिच लीव्स द रूट्स एंड लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट कट टू गिव stubble is known as. Anybody, can anybody tell me what will be the answer here? Yes, Sachin, after this we through this question we are about to discuss ratoon cropping as well. Okay. No, ratoon is not the example of relay crop. ठीक है, let me tell you how. चलो, I can see many of you have given the answer ratoon cropping, but students, answer for this question will be all of the above. ठीक है, अगर आपको ये पता है कि इस पर्टिकुलर टाइप की क्रॉपिंग को रटून क्रॉपिंग कहा जाता है, तो रटून क्रॉपिंग का दूसरा नाम ही स्टबल क्रॉपिंग है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीहार्वेस्टिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड क्रॉप. ठीक है, ओके. सो इसमें कंफ्यूजन है बट नो इशू, आई क्लियर योर कंफ्यूजन. अब रटून क्रॉपिंग क्या है उसको समझ लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे सीक्वेंशियल क्रॉपिंग की बात की, राइट. सीक्वेंशियल क्रॉपिंग में क्या था, वी आर टेकिंग वन क्रॉप, हार्वेस्टिंग इट, देन टेकिंग द नेक्स्ट क्रॉप, राइट. सो इट इज अ सीक्वेंस दैट इज बीइंग फॉलोड. अब एक और टाइप की क्रॉपिंग होती है विच इज नोन एज रटून क्रॉपिंग. ठीक है, विच इज नोन एज रटून क्रॉपिंग. अब ये रटून क्रॉपिंग क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड. ठीक है, तो in this ratoon cropping what is done, like we have a sugar cane
field. So this is sugarcane already growing on the field. Okay, this is your sugarcane crop for say. Okay, so this is your sugarcane field. Now students, there are few crops which have the ability to sprout from their stubbles. Basically, the meaning is कि if we leave a part of sugarcane, which is a kind of that crop, if we leave a part of sugarcane in the field, okay, after harvesting, and then give the irrigation, what will happen? That part will sprout and it will give us the new crop. It will give us the new crop. So what is done basically here? During harvesting, what farmer does, if they have to take ratoon crop, farmer do not harvest sugarcane from the base. They will not harvest sugarcane from here. Rather, they will harvest sugarcane from here, right? They will leave a part of sugarcane in the field as it is. Now, next, what is done? Once the sugarcane is harvested, we will have this situation. We will have a situation where only lower part of sugarcane is present in the field, right? Now, after this, farmer will give the irrigation. So, basically, irrigation is given, water supply is maintained so that this part which is left in the field will absorb the water. And what will happen? Later on, after some times, it will start sprouting. It will start sprouting, like this was the old part, right? So, this is the old part. This is the old part of sugarcane. It will start sprouting and it will form new sugarcane plant. Your new sugarcane plant will come out of this part of plant which is left from the previous harvest. Got it? So this type of cropping is known as ratoon cropping. Clear? This type of cropping will be called as ratoon cropping. Please understand this from here, from this example. So what is done? A part of sugarcane is left in the field, right? It is not harvested from the base, rather a part is left in the on the field, and then it is irrigated, and then from that part sprout will come out and it will form new sugarcane plant. So you can see here, farmer do not need to replant the sugarcane seeds, right? तो अभी farmer ने replanting नहीं की है, पुराने ही plant से नया plant grow किया है. Clear? This is known as ratoon cropping. So students, this is only recommended to take 2 times. ठीक है, farmer can take only this ratoon crop 2 times. उसके बाद क्या होता है, क्वालिटी जो आपका शुगरकेन बनती है वो उसकी क्वालिटी डिटोरिएट होती है. तो इट्स recommended that you take ratoon crop only 2 times. ठीक है, example is sugarcane. Mostly this ratoon cropping is done in sugarcane. Now another name of ratoon cropping is known as stubble cropping. Why? Now from the example that we have discussed so far, इससे clear हो ही गया होगा, because from the stubble new crop is being formed, right? That's why it's called stubble cropping. Reharvesting. Why reharvesting? Because see, here once you have already harvested the sugarcane, now from the same part you are again harvesting the sugarcane. So reharvesting is happening, right? Also you are getting the second crop from the first seedling or the first seed that you have sown. That's why it's called second crop as well. So answer will be option E, all of the above. ठीक है? Clear है? I hope this is also clear, right? Chalo, let's move to the next. If there is any confusion, please do let me know. Next, let's move to the next question and next concept. So there is a thing called as rotation of crop. Okay, what is the meaning of rotation of crop? Your options are: crops are changed from year to year according to plant sequence. Crops grown on stubble. Industrial farming, 2 to 3 types of crops grown on same piece of land at the same time. None of the above. Now this question was again asked to you in 2017. ठीक है? Anybody with the answer? Very good. Very good. I can see right answers coming. ठीक है. Very good. That means you have the understanding of this concept. ठीक है? So basically rotation of crops means when crops are changed from year to year according to the plant sequence. It can be year to year, it can be
season to season also, right? It's not always year to year, but within a year, if you are changing crops in a planned sequence, that is called as crop rotation. Okay? Year to year you are changing, season to season you are changing, but that will be called as crop rotation. Now students, we'll understand the importance of crop rotation, but let me first give you this question. Okay, so ठीक है, we'll I hope I thought that there is another question related to crop rotation, but no issues. I'll answer. I'll explain you the concept of crop rotation here only. ठीक है? तो crop rotation होता क्या है? Let's understand. Crop rotation is basically rotating the crop on a field. ठीक है? Rotating crop on a field. क्यों जरूरी है crop rotate करना? ठीक है? Why it is important that we need to change crop over the season after season or year after year? So basically it is important because अगर हम बात करें exhaustive crop की, ठीक है? अगर हम exhaustive crops की बात करें, you can recall what are exhaustive crops? All your cereals which only drew nutrient from the soil but do not help in replenishing the nutrient back to the soil. तो जितनी भी आपकी exhaustive crops है, अगर आप एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप सिर्फ राइस ही ग्रो कर रहे हो, ठीक है, यू आर टेकिंग ओनली वन क्रॉप, राइस, यू आर नॉट टेकिंग एनी अदर क्रॉप, व्हाट विल हैपन? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ एग्जॉस्टिव क्रॉप्स, आपकी सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगी, राइट? नेक्स्ट थिंग दैट कैन हैपन दैट अगर फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर सीजन में कोई एक पेस्ट इन्फेस्टेशन हो गया, यहाँ पे कोई पेस्ट ने राइस को इफेक्ट कर दिया, राइट? व्हाट विल हैपन? राइस, ये वाला सीजन तो चला जाएगा, दिस पेस्ट विल इन्फेक्ट द राइस, दिस सीजन विल पास एंड अगेन फार्मर हैज टेकन राइस. व्हाट विल हैपन? इस पेस्ट का जितना भी एग या लार्वे है, दैट इज द इनोकुलम विच इज प्रेजेंट इन द फील्ड, विल इम्पैक्ट द नेक्स्ट सीजन क्रॉप एज वेल. ठीक है, तो अब इस पेस्ट की जो लाइफ साइकिल है वो ब्रेक नहीं होगी, बिकॉज इस पेस्ट का जो फूड है राइस, दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द फील्ड, राइट? नाउ if we want to break this pest life cycle, what we need to do? We will have to introduce any other crop which is not the food of this particular pest. ठीक है, अगर आप क्या कर देते हो नेक्स्ट सीजन में, अगर आप राइस नहीं बल्कि वीट ग्रो करते हो, क्या होगा? For this pest there is no food on the field and this pest will starve and it will die. So crop rotation is important for breaking the pest life cycle. Also, अगर आपकी soil की fertility degrade हो गई है and rice is a exhaustive crops, उसने आपकी soil को exhaust कर लिया है. If you include pulses, ठीक है, आप wheat नहीं, आप pulse को include कर लेते हो, तो क्या होगा? pulse include करने से एक तो soil fertility बढ़ेगी, plus again जो ये pest की life cycle है, that will break. Right? So it is very important that you should change the crop that you are taking. You should never take one crop season after season or year after year. So that is the reason why monocropping is never recommended to the farmers, right? Farmers are always recommended to take multiple cropping, mixed cropping, but never the monocropping, because there are so many disadvantages of monocropping, right? Fertility degrade hoti hai, pest cycle will never break. Also, if there is a crop failure, then there will be 100% loss, right? So it is always recommended to take multiple crops. ठीक है? And this particular thing means changing the crop is also known as crop rotation. Okay, if you are specifically rotating the crop for maintaining the soil fertility, for breaking the pest life cycle, that will be called as crop rotation. ठीक है? I hope now this concept is also clear. Let's move to the next question. So this was the question asked to you in NABARD Grade A 2020. It says, what is the cropping pattern of sugarcane with a short span of crop such as potato or onion called that can be harvested even before sugarcane reach maturity? ठीक है. Now, give me the answer of this question. What will be the answer? Anybody? Yes, Sachin. In plantation crops, we cannot
do crop rotation, but yes, then we need different management practices there, right? Then we have to always spray the insecticide, we'll have to look for the infected plant, ठीक है, we'll have to give the fertilizer. So yes, plantation crop में crop rotation possible नहीं है, but उसके लिए फिर दूसरी management practices होती है. Okay, very good. Answer will be companion cropping. ठीक है, all of you have given the right answer. It will be not relay cropping, it will be companion cropping. ठीक है, अब डिफरेंस समझ लेते हैं. कंपेनियन क्रॉपिंग में आपको समझा देती हूँ, देन इस डिफरेंस भी समझेंगे कंपेनियन और रिले क्रॉपिंग का. कंपेनियन क्रॉपिंग क्या होती है स्टूडेंट्स की, लाइक वी हैव अ फील्ड, ठीक है, हमारे पास एक फील्ड है. अब इस फील्ड को वी आर यूटिलाइजिंग फॉर ग्रो क्रॉप लाइक शुगर केन. अगर आपको शुगर केन जैसी क्रॉप को ग्रो करना है, एंड शुगर केन इज 16 to 18 मंथ क्रॉप, ठीक है, शुगर केन को 16 to 18 मंथ्स लगेंगे टू कम टू द मेच्योरिटी. ठीक है, तो क्या होगा कि फार्मर्स को जो रिटर्न मिलेगा दैट विल बी आफ्टर 16 to 18 मंथ. ठीक है, अब initially what will happen, and see sugar cane is a very long duration crop, so that means जो initial growth है वो काफी slow रहेगी sugar cane की. तो अगर आपने यहाँ sugar cane grow किया है in this row, और डिस्टेंस भी आपको मेंटेन करना होगा, क्योंकि बाद में क्या होगा कि जब शुगर केन का पौधा बड़ा हो जाएगा इट विल ओवरलैप. ठीक है, तो क्राउडिंग ना हो, यू विल मेंटेन अ गुड डिस्टेंस बिटवीन टू रोज, राइट. तो ये आपकी शुगर केन आपने ग्रो की है. अब इनिशियली जब ये शुगर केन ग्रो कर रहा है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट कैन टेक 2 to 3 मंथ्स टू कम टू अ सर्टन स्टेज कि अब जब आपका फील्ड कवर हो जाए, राइट. इट विल टेक 2 to 3 months to come to a stage that after that your field is covered. बट उस 2 से 3 महीने को आप यूटिलाइज कर सकते हो. कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? यू कैन ग्रो another crop like short duration crop, like here it is mentioned a potato, onion, right. So in between sugarcane you can either grow potato, you can either grow onion or any other short duration crop. इससे क्या हो रहा है, आपकी sugarcane भी grow कर रही है, आपकी दूसरी क्रॉप भी आपने लगा ली, राइट. तो 2 से 3 महीने का जो टाइम पीरियड है जब यहाँ पे क्राउडिंग होगी एक्चुअल में फील्ड में, जब उसके बाद आप कुछ और ग्रो नहीं कर सकते हो, उससे पहले ही आपने एक और क्रॉप ग्रो कर लिया एंड यू हैव गॉट द रिटर्न फ्रॉम दैट क्रॉप. ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने अपनी इनकम को बढ़ा दिया है. 16 to 18 मंथ्स के बाद आपको शुगर केन से जो रिटर्न मिलेगा वो तो मिलेगा, बट आपने उस टाइम पीरियड को यूज कर लिया है कि जब तक ये शुगर केन का पौधा बड़ा होता है, देन उस तब तक के लिए आपने एक दूसरी क्रॉप को ग्रो कर दिया, राइट. और आपका यहाँ से रिटर्न मैक्सिमाइज हो गया इस लैंड से, सो एक्स्ट्रा इनकम भी हो गई, राइट. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंपेनियन क्रॉपिंग. अब आप ही मुझे पहले बताइए कि अब आपको डिफरेंस समझ आया कंपेनियन क्रॉपिंग एंड रिले क्रॉपिंग का. नाउ कैन एनीबडी टेल मी कि क्या डिफरेंस है कंपेनियन और रिले क्रॉपिंग में? चलो, एनीबडी फ्रॉम द चैट सेक्शन. वी हैव डिस्कस्ड बोथ. We have discussed relay, we have discussed companion cropping. Please tell me, what is the difference? What do you feel? Why companion cropping is different from the relay cropping? Anybody? Okay, so no one has replied. No issue, I'll tell you. See students, if you can recall in relay cropping what we have discussed that we sow the seed of next crop before harvesting of previous one, right. So there the objective was to conserve soil, not conserve, that the objective was to utilize the leftover moisture, the leftover nutrient. Okay, I can see answers coming. So first let me read the answers and then I'll come to the explanation. Very good. ठीक है, ठीक है. You guys have understood the concept, so that means कि ठीक है, आपको समझ आ गया. Those who have replied. So the thing is, in relay cropping, what we were doing, we were sowing the seed before harvesting the previous crop. Objective क्या था? Objective था that we have to utilize the soil moisture and nutrient that is already in the
soil, right? So that is the relay cropping. So पहले crop आपकी reproductive stage पे आ चुकी है, you are about to harvest it and then you are sowing the next crop. कंपेनियन क्रॉप में क्या हो रहा है? कंपेनियन क्रॉप में आपकी जो क्रॉप है दैट इज ऑलरेडी देयर इन द फील्ड, उसके साथ साथ आपने एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को ग्रो किया है, राइट? तो जो दोनों की लाइफ स्पैन है वो कंप्लीटली ओवरलैप कर रही है, राइट? वो कंप्लीटली ओवरलैप कर रही है. बट अगर हम रिले क्रॉप की बात करें तो अ पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल इज ओवरलैपिंग, द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ बोथ द क्रॉप इज नॉट ओवरलैपिंग. ठीक है, राइट? चलो, I hope it's clear now. If still there is confusion, there is any confusion, let me know. Chalo, next question from 2021 exam. Growing 2 or more crops simultaneously on same field is known as. Now, I have already explained you the concept. Please let me know quickly. Multiple cropping, monocropping, monoculture, crop rotation, none of the above. Growing 2 or more crops simultaneously on same field. What will be the answer? ओके, रेस्ट्रिक्टेड फाइल. सी जस्ट वेट, आई विल टेक योर क्वेरी एट द एंड. ठीक है, जब क्लास खत्म हो जाएगी प्लीज रीराइट योर क्वेरी बिफोर आई एंड द क्लास. आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू क्लियर योर एग्जाम दिस ईयर इफ यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ. ठीक है, ओके. जितने भी क्वेश्चन हैं आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड आई विल आंसर देम एट लास्ट. ठीक है, अभी पहले क्लास कंप्लीट करते हैं. वेरी गुड. इट विल बी मल्टीपल क्रॉपिंग. चलो क्विकली लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In which of the following 2 or more crop of different height, ठीक है, अब ये different concept है that we have to discuss. 2 or more crop of different heights are grown simultaneously on a piece of land in a certain period. ठीक है, does anybody know the answer? Let me know. If not, I'll explain you. ठीक है, it's saying that when we grow crop of different height, ठीक है, we have a land, usually crop of same height or one kind of a crop is grown over a piece of land. But if you are taking crops of different height, okay, like this is one crop, this is the other crop, then this is the other crop, then this is the other crop, right? So you are using the land, you are using the vertical space basically here, right? What will be it called? Anybody? Very good. It will be called as multi-story cropping. Okay, and I can see someone has asked me about the multi-story cropping. So multi-story cropping क्या होता है students? In multi-story cropping और multi-level cropping भी कहा जाता है इसे. What we do, we grow crop of different height. ठीक है, so what we does basically here, we utilize the vertical space. So what we do, we grow tall trees, below tall trees we'll grow some short trees, short plants we can say, and then the shade loving plants, they can be easily grown below that, right? So ऐसा अगर कोई फील्ड होगा, उस फील्ड से जो इनकम होगी दैट कैन इंक्रीज बिकॉज आप बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो, राइट? यू आर ग्रोइंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप. यू कैन ग्रो कोकोनट, यू कैन टेक कोकोनट क्रॉप. Okay, below coconut you can take any other crop like papaya or guava. Then you can take other crop like turmeric. ठीक है, then you take any other crop which can be any vegetable, spinach and things like that. So you see you have grown varied type of crops. तो ये बेसिकली मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको वर्टिकल हाइट को यूज करना होता है क्रॉप की, सो दैट जो सनलाइट है दैट कैन बी यूटिलाइज इफेक्टिवली. और मोस्टली जो आपकी शॉर्ट क्रॉप्स होती हैं या छोटी क्रॉप्स होती है, दे आर शेड लविंग क्रॉप्स. वहाँ पे उनको सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, उस तरीके के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. तो इस तरीके से क्या होता है, दिस इज अ सिस्टम वेयर वी आर इंक्रीजिंग मोर एंड मोर, और वी कैन से वी आर इंक्रीजिंग द रिटर्न फ्रॉम दैट लैंड. ठीक है, हम इससे जो भी आउटपुट आया इस लैंड से उसको और बढ़ा सकते हैं. एक ही क्रॉप ग्रो करने से उसी क्रॉप के जो रेट होंगे वो आपको मिलेंगे. आपके पास मल्टीपल क्रॉप्स होंगी तो आपको मल्टीपल क्रॉप्स का जो बेनिफिट है वो मिलेगा, राइट? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, yes, now please give me the answer of this question. Stem borers can destroy rice at any stage of the plant from seedling to maturity with monocropping. The pest problem continues as food is always available to the pest. Which of the following is the best solution offered in this situation? What will be the answer? ठीक है, देखो, कमिंग टू द क्वेश्चन कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, तो आई हैव ऑलरेडी
shown you the exact question that were there in the exam. ठीक है, so this was your question from 2021 exam. This was the question from 2020 exam. Okay, this is the question of 2017 examination. So I have written here, right, जो भी previous year questions है वो मैंने लिखे हैं, और rest questions are written as a practice question. तो आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, that's why ठीक है. restricted files ही I'll be completing this class at 2:30. तो 2:30 के बाद you can ask your doubt. ठीक है, just let me complete it once and then we'll discuss about your query. Answer will be crop rotation. ठीक है, very good. I have already told you आंसर इज क्रॉप रोटेशन, कि कैसे क्रॉप रोटेशन एक आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ शुगर केन. ठीक है, विथ शॉर्ट स्पेन. ओके, सो आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड. चलो, सो दिस क्वेश्चन इज सेम, द आंसर इज कंपेनियन क्रॉपिंग. ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग कंपेनियन क्रॉपिंग. तो क्वेश्चन ही जस्ट रिपीट हो गया है. चलो, लेट्स लीव दिस एंड मूव अहेड. Okay, now please solve this question. Coconut, black pepper, cocoa, pineapple grown together in a field at the same time is the example of which type of cropping? ठीक है, just now we have discussed about this type of cropping system. Please quickly give me the answer. Very good. What will be the answer? अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है. वेरी गुड. आंसर विल बी मल्टी स्टोरी, मल्टी लेवल, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग. ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि यू कैन सी डिफरेंट हाइटेड प्लांट्स आर ग्रोन टुगेदर, सो दैट्स व्हाई इट्स मल्टी लेवल क्रॉपिंग. चलो, so with that we have completed your cropping system and cropping pattern topic. Now we'll discuss few important topic of agroclimatic region. So it is basically one thing that we have to discuss in detail about, that is the agroclimatic zones. So ये question आपका I think PYQ का ही question, sorry, this is also a PYQ. ठीक है, ये भी आपका question I think 2017 या 19 में पूछा गया था. आई डोंट नो एग्जैक्टली द ईयर, बट ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है. हरियाणा बिलोंग टू विच ऑफ द एग्रोक्लाइमेटिक जोन? डज एनीबडी नो द आंसर? Does anybody know the answer for this question? Please let me know. Otherwise, I'll move ahead and I'll explain you what are agroclimatic zones, what regions fall under these agroclimatic zones. ठीक है, very good. ठीक है, those who have given option C answer, very good. It is part of Trans Ganga Plains and region. ठीक है, चलो students, let's understand about what are agroclimatic zones, how many agroclimatic zones we have, and the important agroclimatic zones that are that you need to learn for your exam. ठीक है, तो agroclimatic zones होते क्या हैं? Basically, it is a land unit which is uniform in terms of climate, suitable for certain range of crops and cultivar. तो basically कोई एक region जिसपे सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन हो, जहाँ पे सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन हो, दैट विल बी कॉल्ड एज एग्रोक्लाइमेटिक जोन. सी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो कंट्री है दैट इज वेरी डाइवर्स. ओके, यू विल सी देयर इज अ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन राजस्थान, देयर इज अ डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन इन साउथ पार्ट ऑफ आवर कंट्री, देन नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंट है, नॉर्थ पार्ट में डिफरेंट है. तो बहुत ही मल्टीपल और डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं. तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू make any policy which will fit all these agroclimatic zones. तो गवर्नमेंट जब भी पॉलिसी बनाती है फार्मर्स के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे का क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे है, राइट, सो दैट जो पॉलिसी है वो बेस्ट फिट हो पाए उन फार्मर्स के लिए. बट अगर एक ही पॉलिसी सबके लिए बना दी जाए, दैट विल नॉट हेल्प. सो दैट्स वाई इट इज़ अटेम्प्टेड कि हमें अपने कंट्री को किसी क्लासिफिकेशन के तहत रखना पड़ेगा जहाँ पे हम डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बना सके. और जब हम पॉलिसी बनाए, वी विल सी ओके what एग्रो क्लाइमेटिक जोन दैट पर्टिकुलर रीजन इज फॉलोइंग, अकॉर्डिंगली वी फ्रेम द पॉलिसी और अकॉर्डिंगली वी मेक द पॉलिसी. ठीक है, सो फॉर दैट पर्पज प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज डिवाइडेड इंडिया इनटू 15 agroclimatic zones. We'll discuss that in detail because that is the important one. Then ICR has also attempted to classify country into different agroclimatic zones. So earlier it was 127 agroclimatic zones, but now I think it has changed to 131 agroclimatic zones. ठीक है, then National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning has made 20 agroecological zones. तो आपने इसमें सिर्फ याद करना है जो प्लानिंग कमीशन के 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स होते हैं. लेट्स सी व्हाट आर दीज एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज योर कंट्री. Okay, this is the map and you can see different, it has been divided into different agroclimatic zones.
तो इसको याद कैसे करना है, देयर इज अ ट्रिक फॉर दैट, ठीक है. सी वी हैव अ 15 agroclimatic zones, right? So first we'll understand that we have two Himalayan regions. हिमालयन रीजन्स, वो टू हिमालयन रीजन्स क्या है, एक वेस्टर्न है और एक ईस्टर्न हिमालय है. यू कैन सी फर्स्ट एंड टू. वेस्टर्न हिमालय इज दिस रीजन, ठीक है, विच इज इन द वेस्ट साइड ऑफ अ कंट्री, which is Jammu Kashmir, Uttarakhand and Himachal Pradesh. Then Eastern Himalaya is this part of our country, right, which is the northeast side or northeast state of our country, right. Chalo, next we have 4 Gangetic plains, ठीक है, we have 4 Gangetic plains. So start from here, we have lower Gangetic plains, then we have middle Gangetic plains, then we have upper Gangetic plains, which is this part, and then we have trans-Gangetic plains. So here, from here to here, you will go and you will see this plain is known as Gangetic plains because Ganga river flows here, right? Obviously, that's why it's called Gangetic plains. So lower, upper, middle, trans-Gangetic plains. ठीक है? तो ये states जो इस लाइन में फॉर्म आ रहे हैं, that will be part of these Gangetic plains and hills. ठीक है? तो I have told you it's lower, upper, middle, and trans-Gangetic plains. Now we have central plateaus. We have plateau and hills also. Then we have 4 plateau and hills. ठीक है, 4 plateau and hills है. इसमें आता है आपका सबसे पहले central plateau and hills, which is this part. It is in the center, right? So this is your center plateau and hills. Then we have western plateau and hills, which falls in from जो west side में है थोड़ा सा. So basically ये जो 4 states हैं आपके, ये plateau and hills में आते हैं. This is central plateau, this is western plateau, then this is the southern plateau and this is the eastern plateau and hills. ठीक है, understood? So central plateau, western plateau, southern plateau and eastern plateau and hills. तो 4 plateau and hills हो गए, right? 4 Gangetic plains हो गए, 2 Himalayan region हो गए. इसमें से अब हमारे 2 east coast and west coast plains and hills होते हैं. East coast is your this part of our country, ठीक है, जो आपके कोस्ट रीजन्स के पास पड़ता है, राइट, ईस्ट कोस्ट रीजन के पास पड़ता है, दैट इज ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल्स, एंड देन दिस इज द वेस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल्स, दिस पार्ट, राइट. एंड देन वी हैव गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स, विच इज योर गुजरात, राइट. वी हैव वेस्टर्न ड्राई रीजन, विच इज योर राजस्थान, एंड देन वी हैव आइलैंड, विच इज योर लक्षद्वीप एंड लक्षद्वीप आइलैंड. सो दिस इज योर आइलैंड पार्ट, ठीक है. तो दैट्स हाउ यू cover your 15 agroclimatic zones. I hope there is no confusion. ठीक है, ठीक है. I hope there is no confusion, and now you have understood how to learn these agroclimatic zones. Now let's see exactly what regions are part of which agroclimatic zone. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट वेस्टर्न हिमालयन रीजन में आता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. ईस्टर्न हिमालयन रीजन में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, सो ऑल योर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है. देन लोअर गैंगेटिक प्लेन हिल्स में ईस्टर्न बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम वैली. देन मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स एंड रीजन में आता है आपका ईस्टर्न यूपी, बिहार एक्सेप्ट छोटा नागपुर. छोटा नागपुर कहाँ पे आता है, इट्स इन ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, ठीक है. देन यू हैव अपर गैंगेटिक प्लेन जहाँ पे सेंट्रल और वेस्टर्न यूपी आता है. देन योर ट्रांस गैंगेटिक प्लेन वेयर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, गंगानगर ऑफ राजस्थान लाइज. और जो ट्रांस गैंगेटिक प्लेन है, दिस इज द हाईली प्रोडक्टिव एरिया, ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है काफी ज्यादा है. यू माइट हैव सीन मोस्ट ऑफ आवर फार्मर्स आर फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा, राइट. तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, दैट इज इन ट्रांस गैंगेटिक प्लेन्स. कमिंग टू ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू, राजमहल हिल्स, छत्तीसगढ़ प्लेन एंड दंडकरियाना, ठीक है. These are the places of eastern plateau and hills. Then we have central plateau and hills, Bundelkhand, Malwa plateau, Vindhyachal and Bagelkhand. So students, this Vindhyachal was asked to you in the question, ठीक है. आपके एग्जाम में विंध्याचल से क्वेश्चन था कि विंध्याचल किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में फॉल करता है, तो दैट इज सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स. कमिंग टू अनदर दैट इज वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, इसमें सदर्न मालवा, डेक्कन प्लेट्यू, सदर्न वेस्टर्न में आता है सदर्न मालवा, डेक्कन प्लेट्यू. सदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स में आता है आपका सदर्न महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश एंड नॉर्थ पार्ट ऑफ तमिलनाडु. देन वी हैव ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल्स, कोरोमंडल, नॉर्दर्न
coast. Then we have west coast plains and hill, Konkan, Malabar coast. Then we have गुजरात में आपका गुजरात, ठीक है, साबरमती वैली एंड ऑल. एंड देन वेस्टर्न ड्राई रीजन में आपका मोस्टली राजस्थान आता है. आइलैंड्स में अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स. ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में कौन सा स्टेट या कौन सा रीजन फॉल करता है, बिकॉज दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आस्क्ड यू इन एग्जामिनेशन. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द ट्रिक कि किस तरीके से याद करना है. हाँ, रेस्ट आपको ये स्टेट्स तो या ये जो जगह के नाम है ये आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक है, चलो. नाउ दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ 2021. Which type of ecosystem in India has richest alluvial with adequate water? Anybody? Anybody with the answer? I hope all the agroclimatic zones are clear. कोई confusion है, please let me know. Yes, answer here will be northern plains. ठीक है. Now students, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है. ठीक है, जो इंडिया का alluvial soil is basically the soil which is formed from the river deposition. तो जहाँ जहाँ river flow करती है, river flow करने की वजह से soil deposit होती है, right? उस soil deposition को बोला जाता है alluvial soil and it is very fertile soil. So basically आपके जो rivers कहाँ पे है, northern part में ज़्यादा rivers है, that's why answer will be northern plains. ठीक है, very good. Coming to the next question. Okay, this was in 2025 paper. The Vindhyachal region of India is classified under which of the following agroclimatic zone? ठीक है, just now I have told you. What will be the answer? What will be the answer? ठीक है, आंसर विल बी सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स. वेरी गुड. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? सेंट्रल प्लेट्यू हिल्स में आता है आपका विंध्याचल रीजन. ओके, नाउ आई हैव टू क्वेश्चंस फॉर यू. ठीक है, दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चन that you will have to solve by yourself. First question is, which of the following comes in western dry region? Very easy, right? And second question is, sorry, I have revealed the answer, but no issue. ठीक है. Next question is, saffron, one of the premium crop in India and around the world, is grown abundantly in which of the following agroclimatic zones in India? ठीक है. Please let me know answers of these two questions in the comment section. Okay, I thought, चलो, तो सॉरी स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली प्रैक्टिस के लिए ही था. तो वेस्टर्न ड्राई रीजन में आपका राजस्थान आता है, हमने डिस्कस कर लिया, राइट? और जो आपके लिए क्वेश्चन है वो है एक तो ये क्वेश्चन जो की है, सैफ्रॉन इज वन ऑफ द प्रीमियम क्रॉप, और वो रीजन कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आता है ये आपने बताना है. प्लस आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है which was asked in 2025 again, identify the agroclimatic zone where more than 50% of coconuts are historically concentrated or which represent the heart of Indian coconut cultivation. Again 2025 के फेज 2 में क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को टैकल करने का क्या तरीका होता है. देखो, हम जरूर ऐसा जरूर रहा होगा कि इसके बारे में देयर वाज सम काइंड ऑफ न्यूज इन दैट ईयर. ठीक है, 2025 में ये चीज किसी न्यूज में डिस्कस हुई होगी, दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इज हियर, राइट? बट अगेन ये बन जाता है आपका पार्ट स्टैटिक का, जो करंट अफेयर से आप स्टैटिक लिंक करते हो, राइट? इसी तरीके से आप जब भी कोई करंट अफेयर पढ़ो उससे स्टैटिक लिंक करो, ताकि अगर स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आए यू कैन सॉल्व इट. ठीक है, तो फेज 2 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगेन यस, I know you can solve it. You have to just let me know the answer in the comment section. So again, before ending the class, please now write your query in the chat section. Till then, I'll inform you about our demo course. So it is a 2-day demo course which we provide if you want to purchase our main course. So basically, you can see what all we give in our main course so that you can decide for yourself whether you want it or not, right? Chalo. Now, please ask your doubts. Okay, I can see today I have got so many doubts in the class. Now, please let me know your doubts and I'll answer it. ठीक है. Yes, restricted file. Are you there? If you are there, please let me know. I'll answer your query. चलो, I'll wait for 2 more minutes. Please write your queries so that I can start answering them. Okay.
Okay, Sandeep, say regarding phase 1 notification or notification in general, you can expect that in the month of September, you can expect the notification. Again, these regulatory body notification do not have any fixed timing. So there is no fixed timing, but still expectation is in the September. Okay, so you can expect it will be in the September. Okay, so there have been a lot of students who were asking me regarding the PDF of this particular session. So students, you can join our Telegram channel. So we post all these PDFs or whatever we teach in the classes in our Telegram channel. So see, by tomorrow you will have the PDF of this particular presentation or whatever we have discussed here. And till now also whatever classes we have taken, Telegram में सारी PDF post होती है. Please join our Telegram channel. And from there you can download all these PDFs. Okay. I think so restricted files, if you are there, please let me know. Okay, how to prepare ARD current affair. See, students, if you want to prepare agriculture and rural development current affair, for that, first of all, if you have any course, then you read whatever a current affair is provided in the course. But if you are doing self preparation, then your only one and one source should be PIB. Okay, so please refer to PIB daily. लुक फॉर योर मिनिस्ट्रीज दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ठीक है, वो मिनिस्ट्रीज देखो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री. ओके, सो just look for all these ministries, also including Ministry of Environment, right? Just look for all these ministries and see what is there in news with regards to these ministry. If there is any new update, if there is anything that has been done by these ministries for the farmers, for rural development, you will have to read all those things. So आपका जो one prime source होना चाहिए for covering ARD current affair should be PIB. Not only ARD current affair but also ESI current affair. Okay, it can be covered from PIB if you are doing the self preparation. ऑल्सो स्टूडेंट्स, क्या होगा कि पीआईबी में बेसिकली प्रेस रिलीज होता है, राइट? सो यहाँ पे आपको मान लो कोई एक पर्टिकुलर डिस्कशन हुआ रिगार्डिंग फिशरी सेक्टर ऑफ इंडिया, राइट? और उस डिस्कशन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में कुछ डिटेल्स आई या फिर उसका मेंशन हुआ. ठीक है, हो सकता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर कुछ डेटा रिवील हुआ हो उस पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस में. बट आपने क्या करना है, नॉट ओनली यू हैव टू सी कि वाई दिस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज इन द प्रेस रिलीज, बट ऑल्सो यू हैव टू कवर द स्टैटिक पार्ट ऑफ दिस स्कीम. आपको इस स्कीम को अच्छे से पढ़ना है. ये स्कीम कब रिलीज हुई थी, कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज की है, क्या की ऑब्जेक्टिव है, टारगेट बेनिफिशरीज कौन है, देन व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम, थिंग्स लाइक दैट. ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपना करंट अफेयर कवर करना है. एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर एआरडी करंट अफेयर, अगेन पीआईबी इज द गुड सोर्स फॉर यू. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, वॉइस ऑफ स्वरा मैम, प्लीज इंक्लूड 2024-25 PYQ एज प्रैक्टिस. सी, आई ऑलवेज ट्राई. देखो, ऐसा नहीं होगा कि हर साल हर किसी टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा. जो क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे आज के सेशन में आपने देखा 2025 से 2 क्वेश्चन थे, राइट? तो जिस साल जिस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन रहता है, आई ट्राई टू इंक्लूड देम. एंड अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए ना, तो व्हाट यू कैन डू दैट, वी हैव अ गाइड बुक. ठीक है, फ्रीली वी आर प्रोवाइडिंग दिस गाइड बुक फॉर यू. तो गाइड बुक का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में. जस्ट डाउनलोड दैट गाइड बुक वंस, आपको सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ओके, Sachin, see, compiled ARD static notes. For that, we don't have any separate compiled notes. Rather, we have a complete course. तो अभी के लिए notes separately we are not giving, right? ठीक है, करंट अफेयर कितने महीने का करना है? तो सी, आपको स्कीम्स एटलीस्ट जो स्कीम्स रहेंगी, यू विल हैव टू कवर past 5 to 6 months minimum for the schemes.
For other current affair, you have to cover minimum 3 to 4 months. ठीक है, कम से कम 3 से 4 महीने का करंट अफेयर तो करना ही करना है, बट स्कीम्स के लिए पास्ट 5 to 6 months एटलीस्ट आपने करना है. ओके, टॉटर जो EduTap की ARD की स्टैटिक प्लेलिस्ट है, लेट मी टेल यू, इफ यू आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन, आई वुड से इट इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट टू डू. ठीक है, आप ARD स्टैटिक की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोज. Most of your important topics that are there in the examination will be covered from this ARD static playlist. But let me tell you again one thing, that on YouTube we cannot bring all the content. There will be a lot of content apart from the that we are giving you in the ARD static playlist that is important for exam. And if you just do ARD static playlist from YouTube, I am telling you, for phase 1 you can easily score 20 plus marks. People have done that, right? If you have to just score enough in ARD to clear the cutoff, sectional cutoff, you can completely rely on ARD static playlist that we have on the YouTube. You're welcome, UPSC PW. Okay, ARD current affair के लिए playlist. So ARD current affair के लिए we do have the playlist, and Diksha ma'am is taking this weekly session, so you can rely on that. Okay, because if you see the weightage of ARD current affair, it is less in your examination, but see, you have to understand. ठीक है, करंट अफेयर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ न्यूज है वो पढ़नी है. ARD करंट अफेयर में भी आपको स्कीम्स पढ़नी है, आपको ARD रिलेटेड रिपोर्ट्स पढ़नी है, प्लस ARD रिलेटेड जो अदर करंट अफेयर होता है, लाइक कोई मीटिंग हुई, कोई सेमिनार हुआ, कुछ डिस्कशन हुआ, या कोई MSP रिलीज हुई, या फिर सेकेंड एडवांस एस्टिमेट रिलीज हुए, वो सारी चीजें भी आपको कवर करनी होती है. तो जब हम ARD करंट अफेयर की बात करते हैं, तो स्कीम्स आपने कैसे कवर करनी है, अगेन PIB में जाओ, PIB में देखो कौन सी स्कीम न्यूज में है, उस स्कीम को डिटेल में कवर करो. ठीक है, देन रिपोर्ट्स आपको कैसे कवर करनी है. रिपोर्ट्स भी पूछी जाती है, जैसे कि बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट, NABARD की एनुअल रिपोर्ट. तो ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. उसके लिए आप जो रिस्पेक्टिव वेबसाइट है वहां पे जा सकते हो, राइट, टू कवर दैट रिपोर्ट इन डिटेल. And then other kind of current affair you can watch our ARD current affair playlist. वहाँ पे Diksha ma'am is taking classes and she is teaching you ARD current affair, so you can watch those classes to cover other kind of current affair. But schemes के लिए, reports के लिए you will have to see. Schemes के लिए Gurkirat sir is taking the classes, right? So he is taking the 75 important schemes for NABARD grade A exam. You can watch those classes. Reports के लिए again we will conduct the classes later on. ठीक है, Diksha ma'am will take classes for reports. जितनी भी reports है उनकी अलग से हम classes देंगे. तो आप यहाँ से भी cover कर सकते हो EduTap platform से. But अगर आपको वैसे self study करनी है, then I have told you how to do that. Okay. Anything else? Anything else anybody want to ask? अगर आप प्लेलिस्ट पूछ रहे हो तो प्लेलिस्ट भी है, राइट. तो EduTap के YouTube में जाके आप प्लेलिस्ट चेक करोगे, सेपरेट प्लेलिस्ट है फॉर करंट अफेयर, ARD करंट अफेयर. सचिन, इफ आई टॉक अबाउट NABARD एनुअल रिपोर्ट, अभी तक NABARD की जो रीसेंट रिपोर्ट है वो नहीं रिलीज हुई है, राइट. तो एग्जाम से पहले अगर recent report release होती है, you will have to cover that. Then the past year report will not be relevant. But if not, if there is a scenario that recent report release नहीं हुई है, then yes, past year report will be relevant. You're welcome, Totter. Voice of Sarah, no. See, I cannot take all the classes because we are 2 faculty teaching this subject. So yeah, few classes will be taken by the Diksha ma'am, and I am taking few classes. But yes, if you have any doubt, you can ask me. Before notification also we'll bring up these classes. So might be there I'll take all the classes. So you can ask all your doubt there. है ना? चलो. Anything else? Anybody want to ask? Okay, I think I have no more query. So it's already 2:34. I am waiting for the query of restricted files, but still there is no query that I can see.
ठीक है, restricted files, if you see this video later on, please drop your query in the comment section. I'll reply you there, or you can come in tomorrow session also. Chalo, that's all. Okay, it was nice interacting with you guys, and I hope you have enjoyed the lecture. Thank you for watching. We'll meet on Monday. So keep preparing, and all the best. Okay, so there is a query regarding how to make a mind map. So see, for making mind map is nothing, it's basically your short notes, right? So whenever you are reading, try to try to make ultra short notes. What are ultra short notes? Basically these notes are these are not the detailed notes. आप यहाँ पे सब कुछ नहीं लिखोगे कि okay, agroclimatic zone is a landform which is having this criteria, right? You will just write agroclimatic zone. What are agroclimatic zones? Having common climate. How many agroclimatic zones we have? See, कैसे बनते हैं mind maps? Agroclimatic zones, ठीक है? Regions having same climate, ठीक है? Then how many agroclimatic zones we have? 15 as per the planning commission. Then write as per ICR कितने हैं, as per NBSS LUP कितने हैं, right? अब ये 15 कौन से हैं वो लिखो, और उसमें कौन से रीजन फॉर्म होते हैं. इतने में ही आपका पूरा माइंड मैप बन गया, राइट? सो बेसिकली ट्राई टू मेक वेरी अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स. दैट विल बी रियली हेल्पफुल. एंड कीप दीज नोट्स बाय योरसेल्फ. जब भी आपको मौका मिले, ट्राई टू रिवाइज इट, राइट? उससे आपका रिविजन भी हो जाता है, एंड आपको दोबारा से यूट्यूब नहीं खोलना, या दोबारा से आपको कोई बुक नहीं पलटनी पड़ेगी कि हाँ पे ये मैंने क्या पढ़ा था. तो जस्ट कीप देम हैंडी एंड ट्राई टू जस्ट रिवाइज देम, राइट? ओके, चलो, that's great. I think I have answered all the queries, and I wish you all the best. Keep preparing for your examination, and we'll meet on Monday. So that's all. Thank you. Okay, one more question is there. UPSC, PW, I would say not all the personalities you have to remember, but yeah, you can look for few which are already there in the examination or have been asked in your examination, plus few other important names, right? Not every personality or every name is important for your exam, because very less question have been asked, and if it will be only 1 marker question. So do not waste your time there, right? Just remember few important names, like you can remember Norman E. Borlaug, you can remember MS Swaminathan, then father of agronomy, then the father of genetics, right? Once the father of plant physiology was asked to you, that was quite uncommon, but still it was asked, so you can remember people like them, right? So just important figures, that will be more than sufficient to do. Not each and every personalities you have to learn. Clear? Okay, chalo. I'll still wait for 1 minute because people are asking doubt. So you can ask if you have any. After that, I'll end the session. ठीक है. Any other doubt anybody have? Okay, you're welcome Aman, you're welcome UPSC, PW, you're welcome Voice of Swara. ठीक है, चलो, no doubts. Thank you guys.